So, good evening, partners. We are expecting few more people, partners to join. So, kindly bear with us. We will start in next 2 minutes. Yeah. Thank you. Okay. So, Jaswinder, is my screen visible to you? Jaswinder, can you help me with the screen? Yeah. हाँ, आप पीपीटी चेंज कीजिए ना, वो वाली पीपीटी वाली टैब। Yeah. Is it visible? हाँ, इट इज विजिबल नाउ। Chalo. So, thank you, Jaswinder. And once again, welcome you all partners for the today's session on all about NJ recommended multi-asset portfolio. Sir, my name is Rakesh Baid. I have been associated with NJ for the last 17 years. Currently, I'm taking care of the research at NJ Wealth. So ये आज का एक सेशन हम लोग ने recommended portfolio का एक we have around 23 diversified portfolios that are available with us. तो उसमें से एक portfolio है हम लोग का multi asset portfolio. So आज हम लोग उसके related बात करने वाले. So why we are going to talk about this portfolio specifically is because आज अगर आप देखोगे काफी 2-3 महीने से या for the last couple of quarters, right? हम लोगों ने देखा है कि ये मल्टी एसेट कैटेगरी एज अ होल वी हैव सीन अ मेजर इनफ्लोस ऑफ मनी, राइट? Most of the investors are preferring the multi-asset schemes. Most of the distributors are preferring this multi-asset category, right? So whether we should really have exposure to these categories, अगर होगा तो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, and how we have this portfolio, how do we position this portfolio, क्या features है portfolio के, आज हम लोग वो डिटेल में बात करेंगे. So before going into details about this specific portfolio, let us understand first कि why multi-asset is required. तो let us start with an example. अगर आपके ये स्क्रीन पे you can see there is a rice plate, right? तो आपके पास एक ऑप्शन है कि you have a regular dal chawal on a regular basis, right? And then given an option, you have one more thing कि आप एक proper Indian meal आप प्रिफर करोगे, राइट? तो एक जगह पे दाल चावल है और एक जगह पे प्रॉपर इंडियन मील है. सो व्हाट इज बेटर? ऑब्वियसली जब हम लोग एक ब्रॉडर मील देखते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव मील देखते हैं तो दैट विल बी मोर प्रिफर्ड बिकॉज वो एक प्रॉपर डाइट उसमें हमें मिल जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, एनर्जी, प्रोटीन्स मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है दाल चावल राइस वेजिटेबल्स में, राइट? तो एक प्रॉपर मील हमें मिलेगा, राइट? तो उसके उसके बाद वी विल बी मोर इम्यून टू द डिजीजेस और एनी सॉर्ट ऑफ, हमें जो एनर्जी चाहिए रहता है तो वी विल बी फुल ऑफ एनर्जीज एंड अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो हमें अच्छी तरह से मिल जाता है, राइट? सो वेन एवर वी टॉक अबाउट हैविंग डाइट या हमें खाना खाने की बात करते हैं, एक अगर प्रॉपर डाइट होगा तो हमारे हेल्थ के लिए वो उतना ही बेटर होता है. बट वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, राइट? कि हम लोग डाइट का क्यों बात कर रहे हैं? तो सेम लॉजिक वी कैन यूज टू आवर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. जब हम लोग इन्वेस्टमेंट का भी बात करते हैं तो वी ऑफन टॉक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, राइट? तो डाइवर्सिफिकेशन इज नथिंग बट हैविंग मल्टीपल एसेट्स इन आवर पोर्टफोलियो. क्यों मल्टीपल एसेट्स? बिकॉज अगर मेरा कोई एक स्पेसिफिक एसेट्स में एक्सपोजर होगा
राइट, इट कैन बी एनी एसेट, राइट। तो अगर कोई भी एक एसेट में मेरा एक्सपोजर होगा तो ऐसा हो सकता है कि उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, राइट, या कभी एक एसेट्स कभी कभी नीचे चला जाता है तो ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो पे भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सो दैट इज द रीजन वी ऑलवेज से कि हमें मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल एसेट इट गिव्स यू द राइट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ज्यादा करके लोगों को लगता है कि वेन एवर वी आर डूइंग द नॉन एनजे पीआर यूज, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 5-6 स्कीम्स होते हैं, मिड कैप कैटेगरी में 5-6 स्कीम्स होते हैं, बट इज इट रियली गिविंग यू डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज मल्टीपल स्कीम एक ही कैटेगरी से होने से आपको ऐसा नहीं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। द रियल सेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन गोज व्हेन यू हैव बीन इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। क्यों? बिकॉज हर एक एसेट क्लास अलग अलग मार्केट साइकिल्स में बिहेव करती है। तो वी हैव ऑल सीन कि कभी लार्ज कैप वर्क करता है, कभी मिड कैप वर्क करता है, राइट, कभी गोल्ड, कभी सिल्वर, राइट, कभी यूएस मार्केट, कभी डोमेस्टिक मार्केट्स। तो अलग अलग मार्केट्स का साइकिल होता है, और जब हम लोग अलग अलग साइकिल्स या मार्केट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है पोर्टफोलियो का वो मोर स्टेबल हो जाता है, right? My overall objective when I invest in multiple asset class is not to maximize the return, but to overall reduce the overall risk, जिससे मेरा जो risk adjusted return है सर वो proper हो जाए। So what do you mean by diversification? जब हम लोग diversification का बात करते हैं, so how do I ensure कि my portfolio is well diversified? So there is one methodology that जो हम लोग generally use करते हैं, उसको कहते हैं correlation, right? Correlation क्या? It is a measure कि आपको बताता है कि कोई भी दो एसेट्स वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। सो देयर आर सर्टेन बेंचमार्क नंबर्स दैट वी जनरली यूज इन कोरिलेशन। जैसे हो गया +1, राइट। इफ द कोरिलेशन इज +1, इसका ये मतलब है कि ये जो दो एसेट्स है दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड। इसका ये मतलब है इफ वन एसेट इज गोइंग अप बाय 10%, द अदर एसेट विल आल्सो गो बाय 10%। अगर वो 10% नीचे जाता है एक एसेट, तो दूसरा एसेट भी अगर 10% नीचे जाता है, इन दैट केस वी से कि दिस टू एसेट्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड, परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। एक सेकंड होता है कि आपका जो स्कोर होता है कोरिलेशन का, इट कैन गो फ्रॉम +1 टू -1। तो देयर माइट बी अ स्कोर वेयर देयर माइट बी अ नंबर वेयर द कोरिलेशन इज 0। तो 0 मतलब जो ये दो एसेट है, इट कैन बी एनी एसेट्स, राइट। तो ये दो एसेट है जिसका भी आप कोरिलेशन निकाल रहे हो, 0 मतलब ये दो एसेट के बीच में देयर इज नो कोरिलेशन और वेरी लेस कोरिलेशन, राइट। वो दोनों रिलेटेड ही नहीं है, राइट। उनका जो मूवमेंट है, प्राइस मूवमेंट है ऊपर जाने का या नीचे जाने का, वो एक दूसरे के एसेट्स पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होता। फिर एक थर्ड ऑप्शन आ सकता है कि -1, जैसे मैंने बोला +1 से लेके -1 जा सकता है। तो -1 रिप्रेजेंट्स अ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, इसका ये मतलब है कि अगर कोई एसेट 10% पॉजिटिव जाता है तो दूसरा एसेट आपका 10% नेगेटिव जाएगा। अगर कोई 10% नेगेटिव जाता है तो दूसरा 10% पॉजिटिव जाएगा। सो दिस टू एसेट्स जनरली मूव इन द ऑपोजिट direction, and this is the right form of diversification when you have a negative correlation within the asset class। कि अगर आप एसेट क्लास का दो बात करते हो, अगर दो एसेट क्लास का नेगेटिव कोरिलेशन है, तो दिस गिव्स अ प्रॉपर राइट वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, राइट। सो लेट अस सी कि जब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एसेट क्लासेस व्हिच आर अवेलेबल, एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन दे शेयर। तो अगर हम लोग लार्जली बात करें तो दीज आर द ब्रॉडर 4 एसेट एलोकेशन, जैसे इंडियन डेट हो गया, इंडियन इक्विटी मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, राइट, इंटरनेशनल इक्विटीज हो गया। तो वी हैव ट्राई टू कवर द फाइनेंशियल एसेट्स, राइट, जिसमें हम लोग ने फिलहाल एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट कंसीडर द रियल एस्टेट। बट अगर ब्रॉडली अगर हम लोग ये चार एसेट्स का बात करें तो यू कैन सी द रिलेशन बिटवीन द इंडियन डेट एंड द इंडियन equity market is very low. It is positive, but the correlation is very low, 0.04. However, if you see the correlation of gold and debt, again there is a negative correlation, right, -0.02. Second is agar aap gold, if you see the correlation of gold and Indian equities, again there is a negative correlation of 0.05. इसका मतलब है एक एसेट अगर ऊपर जाता है तो दूसरा एसेट जो है वो नीचे आएगा। And if you see the correlation between the Indian debt
and then international equity again there is a negative. Indian equities and the international equities अगर आप देखोगे तो it is positive 0.26. However, the correlation positive है पर it is not that much higher. Again, the international is positively correlated, but again the correlation is very low. राइट तो जहां पे भी हमें नेगेटिव कोरिलेशन मिलता है या तो द कोरिलेशन इज वेरी लो, सो दीज एसेट क्लास गिव्स अस द राइट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. इसका ये मतलब है अगर कोई एसेट्स जो है अगर वो ऊपर जाता है, अगर मैं इक्विटी एंड गोल्ड का बात करूं तो देयर माइट बी साइकिल्स इन द इकोनॉमी. ऐसा हो सकता है अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं तो गोल्ड हैज रियली आउट परफॉर्म गोल्ड एंड सिल्वर. जब कोई एक एसेट क्लास बढ़ता है तो शायद दूसरा एसेट क्लास उतना परफॉर्म नहीं करता, और जब आपके पास नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स है आपके पोर्टफोलियो में तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का सर ये वॉलेटिलिटी रिड्यूस करता है. राइट, सो लेट अस सी हाउ these assets have been performing in the historically. तो जब मैं ये चार एसेट्स का बात करता हूं तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन और अ वेरी लो कोरिलेशन, हाउ दिस एसेट्स हैव परफॉर्म इन डिफरेंट मार्केट साइकिल्स. सो ये राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है ईयर ऑन ईयर हु इज द विनर इन टर्म्स ऑफ कौन से एसेट क्लास ने कितना रिटर्न आपको दिया है. तो ये if you can see here in the year 2002 अगर आप देख सकते हो तो the gold has given a positive return of 24%, whereas the international equity has given a return of -20 and the domestic equity has given a return of just 5%. तो यह जो पॉइंट हम बता रहे थे कि अगर कोई एसेट क्लास इतना मूव नहीं करता तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो दूसरा एसेट क्लास है वो आपको परफॉर्मेंस में हेल्प, वो परफॉर्म करके आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी ला सकता है. तो दिस इज समथिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड. एक डेटा यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो इन द ईयर 2012. सिंस 2012 to 2015 the gold has given negative or zero returns consecutively for the this 4 years period. पर वही पीरियड में आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल इक्विटी इन द ईयर 2013 इंटरनेशनल इक्विटी had delivered a return of 39%, domestic has given a return of 33%, right? In the year 2015 सबसे ज्यादा रिटर्न 9% was given by debt. सो अलग अलग एसेट क्लास सर अलग अलग साइकिल में परफॉर्म करता है, और इसके यही रीजन की वजह से if you are diversifying in different asset class, तो it gives you the right amount of diversification, और जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है आपके पोर्टफोलियो का वो बेटर डिलीवर करता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स. राइट, एंड द ट्रस्ट मी, जब हम लोग ये डेटा तो हिस्टोरिक है, बट अगर कोई आप पूछे नहीं जाओगे कि अभी कौन सा एसेट क्लास परफॉर्म करने वाला इन द नियर फ्यूचर, सो दैट विल बी रियली डिफिकल्ट टू predict, because no one can predict कि how the asset class will be performing short term 1 year 2 years कैसा परफॉर्म करेगा वो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए we should have an exposure to multiple assets so that we get a right amount of diversification. So how do I get कि मैं अलग अलग assets में मैं किस तरीके से exposure ले सकता हूँ. So the best part is everyone knows कि we have one category under mutual funds. We call it as a multi-asset allocation. So these categories specifically invest in 2 or more asset class. तो जब ये एक दो से ज्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है तो उसको मल्टी एसेट कैटेगरी कहते हैं. तो ये एसेट कैटेगरी से क्या होता है, ये ब्रॉडली इक्विटी, डेट, यूएस इक्विटी, कमोडिटीज में स्पेसिफिकली मोर स्कीम्स आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर. ब्रॉडर एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करता है जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन या आपको ओवरऑल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़ सकता है. राइट, सेकंड, कभी कभी क्या होता है कि व्हेनेवर वी आर इन्वेस्टिंग इन अ स्पेसिफिक एसेट क्लास तो उसका परफॉर्मेंस अगर काफी वोलेटाइल होता है तो अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उससे कम हो जाता है. राइट, तो वो एलोकेशन भी हमें ये एसेट क्लास के थ्रू मिल जाता है. एंड ट्रस्ट मी, इफ आई हैव एन ऑप्शन कि मैं थोड़ा गोल्ड ले लूं, थोड़ा सिल्वर ले लूं या इंटरनेशनल इक्विटीज ले लूं, बट आई डोंट नो एज अ इन्वेस्टर और अ डिस्ट्रीब्यूटर कि व्हेन डू आई चर्न द पोर्टफोलियो, चर्न इन अ सेंस व्हेन डू आई रीबैलेंस, सो दैट मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो allocation है to particular assets that remain logical throughout the tenure of the investment. Plus, जैसे मैंने बोला, when you are having exposure to अलग अलग categories, different categories, तो उससे benefit ये होता है, इसका जो ultimate जो benefit मिलता है investors को कि they get a
proper risk adjusted returns in the long run, right? So this is a category जहाँ पे इसलिए we have seen the time since when there is was a rally in the gold and silver, people have started showing interest in these specific categories, and the amount of money that is have been coming in the last couple of months or quarter, आप देखोगे there is a huge amount of that money which has come. तो when this asset, जब ये asset लोगों को इंटरेस्ट कर रहा है, आई मीन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर लाइकिंग, सो हाउ डू आई इन्वेस्ट, तो मुझे कौन से स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज देयर माइट बी मल्टीपल स्कीम विद इन दिस मल्टी एसेट कैटेगरी. तो हाउ डू आई इन्वेस्ट, हाउ डू आई फाइंड आउट कि कौन से स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व योर प्रॉब्लम सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन क्लाइंट एक्विजिशन एंड क्लाइंट मीटिंग, वी हैव a curated portfolio. हम लोगों ने एक रेडीमेड पोर्टफोलियो ऑप्शंस आपको बना के दिया है in the form of NJ recommended multi-asset portfolio. So I just take few lines talk about NJ recommended. NJ recommended curated portfolios or mutual fund portfolios. We have a diversified 23 portfolios with us, and these portfolios are specially designed taking into consideration that an investor might have a different objective, उनका risk appetite अलग हो सकता है, तो अलग अलग इन्वेस्टर्स के नीड और रिस्क एपेटाइट को सूट करने के लिए हमने ये 23 पोर्टफोलियोज बनाया है, राइट. और उसमें से एक पोर्टफोलियो है, वी कॉल इट एज अ मल्टी एसेट पोर्टफोलियो. सो लेट अस टॉक मोर अबाउट दिस पोर्टफोलियो. तो जब हम लोग ये पोर्टफोलियो बना रहे थे, वी हैव कंसीडर 3 स्कीम्स अंडर दिस. वन इज द डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, other is the SBI, and the third is the White Oak Multi Asset Allocation Fund. So we have taken this 3 specific schemes under the multi asset portfolio. So how do we select the schemes? अभी आप बोलोगे कि ये 3 schemes क्यों आई है, why not others? So sir, generally क्या होता है कि whenever we are building this mutual NJ recommended mutual fund portfolios, there is a thorough process that we follow. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, if you broadly if we say कि we do a quantitative analysis and the qualitative analysis. तो जब हम लोग qualitative analysis करते हैं, we see the overall process of the AMC, how the AMC is being active in the selecting the stocks in the portfolio, उनका overall process कैसा है, what is the risk measures that they have taken, how big is the research team, right? How do they evaluate their research members? What are the risk parameters? What are the clearly defined do's and don'ts? तो काफी सारा डिस्कशन होता है, एक डिटेल डिस्कशन होता है CIOs and fund manager के साथ, so that we understand the overall investment process of the AMCs. The bottom line is, I mean, जब हम लोग कोई भी when we give any money to the AMCs, what we try to check is how much comfort level that we have with that particular AMCs. So once we are done with the qualitative analysis, then we do the quantitative analysis. But यहाँ पे आप देख सकते हो कि multi asset categories काफी सारे funds अभी recently आए हैं, तो mostly these funds were selected based on the quantitative analysis or qualitative analysis by understanding the investment process and meeting with the fund managers. So ये 3 portfolio हम लोगों ने 3 schemes हम लोगों ने select किए. However, one point to note is सिर्फ schemes are not selected on the basis of qualitative and quantitative. हम लोग diversification angle भी इसमें काफी important देते हैं कि you can see ये 3 assets, ये 3 scheme में से 2, the style जो investment style है, 2 are of GARP. GARP is nothing but growth at reasonable price, and the DSP and White Oak are GARP, and the SBI is a value oriented. So value oriented fund. So इसमें we give you a diversification in terms of how the fund has been managed, because you also know कि कभी-कभी growth style चलता है, कभी blend चलता है, कभी there is a rally in the value philosophy या value style. So अलग-अलग style, अलग-अलग parameter, अलग-अलग time frame में cycles में workout करते हैं. So we are trying to give you a logical diversification in terms of style also. Plus we are giving you an equal, generally near to the equal weightage in all the 3 schemes. So the White Oak has an exposure of around 34% in the overall portfolio, while SBI and DSP are having an exposure of 33%. Right? So whatever 100 rupees if you have invested, 33 will go in DSP, 33 will go in SBI, and the remaining 34 rupees will go in White Oak multi-asset portfolio. Right. So why 3 schemes, right? Why 3 schemes is again because we wanted to overall reduce the investment risk in a particular scheme. That is the reason हम लोगों ने 3 schemes का
पोर्टफोलियो बनाया है. Why three? Because there are different fund managers, there are different AMCs. तो हमें अलग अलग फंड मैनेजर्स का भी इसमें एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज का भी एक्सपोजर मिलेगा. दैट इज वन रीजन, राइट. सबका जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो जो मैनेज करते हैं उसको अलग अलग करते हैं. सो अलग अलग पोर्टफोलियो का हमें फ्लेवर मिल सकता है. द वे दे एलोकेट द एक्सपोजर इन गोल्ड या फॉरेन इक्विटी या तो डेट, अगेन द रूल्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच फॉर ईच एएमसीज, राइट. तो अलग अलग आपको अप्रोचेस मिलता है, अलग फंड मैनेजर्स मिलता है, जिसके वजह से आपका जो ओवरऑल रिस्क होता है ये पोर्टफोलियो का आपका मिटिगेट हो जाता है. आई मीन वी कैन से द ओवरऑल रिस्क रिड्यूसेस. अगर कोई भी फंड अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, द रिमेनिंग टू फंड्स कैन हेल्प इन overcoming the downfall or the negative returns of one scheme. So this is the reason we have thought of creating a portfolio where we will include 3 schemes in the portfolio. Next is, I mean, how the fund is, I mean, how the portfolio was launched. So this portfolio was launched on 20th April 2004. And who should invest in this portfolio? Again, because there is a exposure of equities, gold, right? So the investor who is at a risk in terms of risk, who is a moderate investor, can invest in this particular portfolio. The risk-o-meter is very high, and ideal time frame is more than 5 years. The minimum amount of investment is 30,000 rupees in this portfolio, and the minimum amount of SIP is 5,000. And one thing, you can always opt an SWP in this portfolio. आप इसमें ये portfolio में SWP भी कर सकते हो, and there is no lock-in period. Let us go through the scheme details. अभी थोड़ा डिटेल के बारे में बात करते हैं कि how logical diversification these 3 schemes will be giving to the investors. तो जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे स्कीम जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुए. सो मोस्ट ऑफ द स्कीम्स का डेटा वाज नॉट अवेलेबल हिस्टोरिक. सो दैट इज द रीजन वी हैव emphasized more on the quantitative aspects and have given a logical diversification. So DSP, the launch date was around 27 September 2023, SBI 16 May 2018, and Whiteock around 19 May 2023. Up, you can see the AUM and the number of securities that the underlying portfolio is holding. This is a broader asset allocation. अगर हम लोग बात करते हैं पोर्टफोलियो का, तो ये broader आपका asset allocation है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो equity. If anyone is investing in the entire portfolio, in that case, the active equity that is the stocks, उनका जो एलोकेशन होगा दैट इज अराउंड 39%. अगर आप आर्बिट्राज काउंट करोगे तो इट इज आर्बिट्राज इज अराउंड 3.9%. डेट इज अगेन अराउंड 30%. गोल्ड इज अगेन 8% and others is around 9.9%, and cash equivalent is around 8.06%. So you can see that the portfolio is well diversified, right? And this data is as on 31st October 2025. Moreover, we also give you the details of the large cap allocation. So how the allocation is done. So ये जो 39% आपको दिख रहा है इक्विटी का, एक्टिव इक्विटी on the left hand side, ये 39%, how this 39% has been divided. So 65% of the entire equity, that is 39%, is it large cap, right? Mid cap is around 14%, small cap is around 20%. So you can see the multi-asset portfolio of NJ recommended multi-asset portfolio, it is more dominated towards large cap, followed by small cap, and then mid cap. तो आपको large cap, mid cap सिर्फ assets का ही नहीं, but आपका overall underlying portfolio भी आपको उसमें diversification मिल जाता है. You get an exposure to all the 3 caps, right? And this basically, as of now, it is more tilted towards large cap, but it is on the discretion of fund manager, basically how he will increase or decrease the exposure in the caps, right? And when we say it gives a true diversification, one ratio that you should always check is for the overlap कि 2 स्कीम्स के बीच में, राइट? ये बहुत जरूरी है कि हम लोग काफी सारे रेकमेंडेड पोर्टफोलियोज में जनरली वी कंसिडर दिस ओवरलैप, because if I am holding 2 schemes and the underlying portfolio of the 2 schemes is same, then logically it doesn't give me any diversification. वो दोनों स्कीम होल्ड करके इतना मुझे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता. तो क्या होना चाहिए ओवरलैप में? सो व्हेनेवर यू आर सीइंग द ओवरलैप, तो उसमें जो ओवरलैप है इट शुड बी जनरली लेस.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो द डीएसपी एंड एसबीआई मल्टी कैप में द ओवरऑल पोर्टफोलियो लैप इज जस्ट ऑफ 15%, 15% का ही सिर्फ ओवरलैप है, whereas डीएसपी एंड वाइटॉक का द ओवरलैप इज अराउंड 30%. So यहाँ पे this is very important to understand कि most of the times you will see the investors portfolios have been overlapped with 45%, 50%, but this case यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ओवरऑल और लैपिंग ओवरऑल पोर्टफोलियो लैप है, it is just around 15%, 15 to 30%. तो this gives me a proper diversification. और जब मेरा पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड तो वो केस में I will be able to generate better. My portfolio will be more stable, which will result in giving me better risk-adjusted returns in long run. So that is the reason why diversification helps. अभी सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी एसेट कैटेगरीज ना सर, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीम्स राइट अंडर दिस कैटेगरी. One which falls under the equity taxation, another which falls under the others taxation. So others में ऐसा होता है कि if your equity exposure is more than 35 but less than 65, तो all those schemes will be falling under others taxation. So हम लोग ने जो ये पोर्टफोलियो में जान we have I mean it was taken a conscious call कि why we should not go for equity taxation वाला schemes and why we should go for the other category schemes, because उसमें एक तो टैक्सेशन का इम्पैक्ट 2 साल के बाद, बिकॉज इफ यू सी द ओवरऑल रेट्स राइट, अगर आप 2 साल के बाद भी रेट्स देखोगे तो इट इज अगेन 12.5%, राइट. इक्विटी में भी 12.5%. हाँ, पर इक्विटी में आपको 1.25 का एग्जाम्पशन मिलता है, बट ये 2 years में आपको वो उसमें एग्जाम्पशन नहीं मिलता है. तो एनी इफ यू आर होल्डिंग दिस पोर्टफोलियोस आफ्टर 2 years you will be taxed at a long term capital gain, and the tax rate is around 12.5%. or any gain if you are holding this if you are selling this before 12 years, 24 months, then it will be added in the total income of the investors. So you will remember कि जब हमने पहला about details ये portfolio का start किया था, the time period of this, the ideal holding period was 5 years. That is a minimum that we always say. But if you think about investing in equity or any other mutual fund, multi-asset funds, so generally we should have longer exposures for 10 years, 15 years exposure to give you a proper डाइवर्सिफिकेशन टू योर पोर्टफोलियो. तो जब आप 5 years 10 years ये पोर्टफोलियो होल्ड करता है तो मोर और लेस ये जो टैक्सेशन का इम्पैक्ट है वो थोड़ा नलिफाई हो जाता है. पर एक चीज हमें यहाँ पे हमेशा देखने हैं कि व्हेन वी वर कंसिडरिंग कि विच वेदर टू गो फॉर इक्विटी और वेदर टू गो फॉर अदर टैक्सेशन, एक जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है वो थोड़ा क्लियरली इसमें ये डेटा में आपको स्क्रीन पे देख रहा था. तो when we talk about equity taxation, the domestic equity can go between 65 and 80%. So when we talk about 65 and 80, so इसमें ज्यादा करके the portfolio will be tilted more towards the domestic equity, जिसके वजह से शायद आपको इतना diversification का benefit ना मिले. So whenever I am holding a portfolio, जब मैं कोई भी एसेट इंक्लूड करता हूं तो there should be a proper weightage that should be given to each assets. तो अगर मेरा बहुत मिनिमल वेटेज है टू पर्टिकुलर एसेट्स तो शायद मुझे डाइवर्सिफिकेशन में सर इतना हेल्प नहीं करेगा. सो जनरली द अदर स्कीम्स दैट वी आर टॉकिंग, जहां पे हम लोग का ये पोर्टफोलियोज जो ये 3 स्कीम्स का पोर्टफोलियो है, दिस इज द एसेट एलोकेशन दैट यू कैन सी. जनरली 35 to 80%, international equity 0 to 50%, gold around 10 to 50%, and debt around 10 to 50%. And the best part is when we talk about 10 to 50%, the underlying asset in the portfolio is managed dynamically. आपका ये जो पोर्टफोलियो है वो अंडरलाइन डायनामिकली मैनेज होता है. तो द फंड मैनेजर हैज अ डिस्क्रिशन कि वो कभी गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ा भी सकते हैं, कभी गोल्ड का एक्सपोजर वो घटा भी सकते हैं, बट दे कैन मूव बिटवीन द रेंज ऑफ 10 to 50%, राइट. सो ये जो पोर्टफोलियो है जो मैंने आपको अभी डिटेल शेयर किया, सो दिस पोर्टफोलियो आई मीन जैसे मैं बोला, इट इज अ पार्ट ऑफ अ रेकमेंडेड पोर्टफोलियोज, एंड दिस पोर्टफोलियोज यू कैन चेक, यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ द पोर्टफोलियोज ऑन योर पार्टनर डेस्क इटसेल्फ. अगर आप पार्टनर डेस्क पे जाओगे, ऑन द डैशबोर्ड यू कैन सी on the left hand side there is one tab for the all about NJ recommended. अगर आप इस पे क्लिक करोगे, right, so it will redirect you to the NJ portfolio recommended page. So there is a main page and the archives. अगर आप main page पे जाओगे, it will take you to this page, right. अगर आप scroll down करोगे
there are multiple portfolios that we have curated for different sort of investors. तो जैसे वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स में अलग पोर्टफोलियोज होता है, जैसे ग्रोथ पोर्टफोलियो हो गया, ग्रोथ पोर्टफोलियो एग्रेसिव हो गया, राइट. एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए वी हैव डिफरेंट पोर्टफोलियोज, राइट. बैलेंस 90 या 80 पोर्टफोलियोज हो गया. मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग के पास ये मॉडरेट जो मल्टी एसेट पोर्टफोलियो सर है, इट इज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो विच इज फॉर द मॉडरेट इन्वेस्टर्स. तो यहाँ पे आप वो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, द सेम दैट यू कैन गेट ऑन द एनजे रिकमेंडेड पेज. एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस एरर ऑन दिस चार्ट, आप देख सकते हो बॉक्स है, उसमें लाइन है, राइट. सो इफ यू क्लिक हियर, ये क्यूआर कोड ओपन होगा. सो यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड, और जैसे आप स्कैन करोगे सर, सो देर ये आपको एक रेकमेंडेड पेज का एक बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा. रेकमेंडेड पेज का एक बॉक्स आपका ओपन, मतलब ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा. तो ये पीडीएफ इज नथिंग बट ये जो हम लोग का रेकमेंडेड पोर्टफोलियो है, वो रेकमेंडेड पोर्टफोलियो का एक पूरा डिटेल में है, राइट. सो जो मैंने आपको स्क्रीन पे ये डेटा दिया है, राइट, उसमें फिर मैंने जो 3 स्कीम्स का नाम है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लस आपको यहाँ पे कैटेगरीज भी दिख रही है, कौन सी कैटेगरी में या उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, कितना एलोकेशन है. सो दिस विल बी एबल, यू विल बी एबल टू नो. प्लस यू विल बी एबल टू नो द हु द फंड मैनेजर्स आर, वो कितने फंड्स मैनेज कर रहे हैं, राइट. और उनका इंसेप्शन डेट कब, मतलब हाउ सिंस व्हेन दे आर मैनेजिंग द फंड. प्लस यू विल गेट द पोर्टफोलियो इनसाइट. तो पोर्टफोलियो इनसाइट में आप देखोगे कि हम लोग ने अंडरलाइंग स्कीम्स का हम लोग आपको रिटर्न दे रहे हैं. अंडरलाइंग स्कीम जो डीएसपी है, एसबीआई है, वाइटॉक है, तो ये तीनों स्कीम्स का 6 इयर्स का हम लोग रोलिंग रिटर्न्स, नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड ड्रॉ डाउन दे रहे हैं. बट यहाँ पे एज आई सेड, दिस स्कीम्स, ये जो 2 स्कीम्स है उनको 6 इयर्स नहीं कंप्लीट हुआ, बिकॉज वी आर जनरली कंसिडरिंग 6 इयर्स पीरियड फॉर कैलकुलेटिंग द रोलिंग रिटर्न, और वो 6 साल नहीं हुआ है. इसके वजह से अभी यू कैन सी द रिटर्न्स ऑफ ओनली एसबीआई मल्टी एसेट पोर्टफोलियो. Plus, we are giving you the overall sectoral exposure कि how the within this 3 particular schemes कौन से sector में आपको कितना exposure है, right? फिर the same data we are giving you for scripts also कि कौन से stocks में कितना आपका exposure है, right? Which stock is having the highest exposure, which stock, right? Top 10 हम लोग scripts और top 10 sectors आपको exposure data that we are giving to you. Plus the portfolio insight में we are giving you the asset allocation, द एमकैप टाइप एलोकेशन की कौन से पोर्टफोलियो में आपका कितना पैसा है, प्लस ओवरलैप वी आर गिविंग. अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गिविंग यू अदर डिटेल्स, उसका यूएम कितना है, हाउ मच इज द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दैट द स्कीम इज होल्डिंग, हाउ मच इज द स्कीम एसेट एलोकेशन, इसका एमकैप एलोकेशन कितना है, और उसका ओवरऑल जो डेट कंपोनेंट वो होल्ड करता है. सो ये डेट कंपोनेंट का जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग रेटिंग्स में कितना है, राइट. सो ओवरऑल रेटिंग एक्सपोजर भी हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं. सो एक कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ है. तो इंस्टेड ऑफ व्हेनेवर एनी इन्वेस्टर इज आस्किंग यू कि सर यू सजेस्ट मी 1 or 2 मल्टी एसेट स्कीम्स, तो द बेस्ट पार्ट इज यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दिस एंड यू कैन फॉरवर्ड इट टू द इन्वेस्टर कि सर this is something that I am suggesting this portfolio for you, obviously after considering what is the overall objective and what is the overall risk appetite of the investors. So very handy that you can share with the investors, right, whenever you are meeting them for the business, right. So this is something, जैसे हम लोगों ने बात किया कि all the data that we are giving is available on the recommended page. So again, why this is important from a client perspective is because we always, as a distributor, our objective is not to give the maximum return to the investor, but we also want कि we give a better risk adjusted returns, right. और वो कब होगा, वो तभी होगा सर when your portfolio is logically diversified, right. Diversified in not only in the terms of assets, राइट, कि अलग अलग एसेट्स, बट इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. तो जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, तब आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, राइट, कि इन्वेस्टर्स को एक स्टेबल रिटर्न मिल सकता है, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है. एंड ट्रस्ट मी, एट एनजे, एट बीइंग a part of research team, right, we are aggressively managing, we are aggressively tracking these schemes, we are meeting the fund managers on a regular basis, so that you do not have to do this tedious job of analyzing, doing qualitative quantitative analysis with the
we at NJ are doing it, and so that you can concentrate more on your core business, that is meeting investors and understanding their needs and risk appetite. Right. So with this session, I'm ending with this slide. I'm ending my session. So I'm opening the session for Q&A. So, sir, if you have any doubts, so you can please ask. Right. So let me go through the Q&A link. Okay. Okay. Just a second. Okay. So there is one question that I'm seeing. Yeah, how this portfolio is different from the balanced advantage portfolio. So, balance advantage portfolio, there is no component of commodities of gold and silver. So generally that portfolio is managed between two asset class, which is equity and debt. However, multi-asset is also dynamically managed, but additionally there will be a component of gold also, gold, silver, or the US equities, different whatever the underlying assets that the portfolio is investing in. तो वो भी dynamically manage होता है, पर इसमें gold component होता है. That is the only difference between this portfolio and the BAF portfolio. Right. Okay. So the next question is, I mean, why not equity fund? Okay. So, sir, has जैसे मैंने आपको बोला था कि there are two schemes under this underlying portfolios. I mean, under the multi-asset category, the schemes which are having an equity taxation and the other schemes which are having a other taxation. Right? It is not debt, it is not equity. So all the schemes falls जो दोनों कैटेगरी में नहीं होता है वो अदर्स में आता है. तो अदर्स में क्या होता है सर, आपका 2 साल के बाद टैक्सेशन 12.5% आता है. बट जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस मल्टी एसेट, तो आप देखोगे कि जितने भी ये अदर्स कैटेगरी के जो फंड्स है उसमें जो रेंज होता है सर टू गो इन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी या अदर एसेट क्लास में, द रेंज गोज फ्रॉम 10 to 50%. So, and the overall product, the overall asset is also dynamically managed. So, long term में ये जो when we are holding it for 5 years, when we are holding it for 10 years, तो उसका impact जो है वो overall reduce हो जाता है. So that is the reason हम लोगों ने ये 2 years वाला taxation वाला product जो है वो we thought of creating the portfolio of considering these three schemes. Right. So one more question is, can we do an SWP in the schemes? Yes, the SWP option is available. आप इसमें ये पोर्टफोलियो में SWP भी कर सकते हो, राइट, ये पोर्टफोलियो में. और जो भी रेगुलर रूल्स एंड नॉर्म्स आता है ये पोर्टफोलियो में SWP के, वो आप यहाँ पे भी वो अप्लाई. ओके, तो जनरली 6% ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो जो है आइडियली आप वो जो है वो विड्रॉ कर सकते हो, राइट. The next question is, right, how the overall performance is of portfolio. तो ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ द परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो कि अभी इट इज जस्ट उसको एक इतना लॉन्ग पीरियड भी नहीं हुआ है, राइट. सो जनरली परफॉर्मेंस हमें देखना चाहिए लॉन्ग टर्म, बट ओवरऑल इट हैज गिवन अ डिसेंट पोर्टफोलियो, डिसेंट रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स. अगर आप एवरेज मिड कैप कैटेगरी का भी आप देखोगे रिटर्न्स, सो the returns was much better than the average category of the mid cap of the multi asset category returns, right. So decent performance in whatever the short period. Again, it is very short, so probably I would not like to comment. Abhi at least 3 years, 5 years, at least 6 years to period hona chahiye to give you, to show ki how that overall portfolios perform in different cycles. Right. Right. Okay, so there was one more question ki sir ki how why these schemes, three schemes, why not other schemes. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि सर एट एनजे रिकमेंडेड पोर्टफोलियो व्हाट वी ट्राई टू डू इज, हम लोग सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखते, पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखते. देयर आर एक सर्टेन प्रोसेस दैट वी फॉलो व्हेनेवर वी आर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो और वी आर क्यूरेटिंग अ पोर्टफोलियो. तो वो क्या चीज है, तो जब भी हम लोग पोर्टफोलियो का बात करते हैं कि दैट वी फॉलो प्रोसेस जहां पे हम लोग क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं. Then while creating a portfolio, we check whether that portfolio is giving you a logical diversification in terms of investment style, in terms of market cap exposure, right. So वो सारी चीजें consider करने के बाद we have included these three schemes in our recommended portfolio.
right? So okay. Okay, so one interesting question ki whether this portfolio will be a part of the investment proposal writer. The answer is yes. कि आप recently the investment proposal writer is something that we have recently launched. तो आप देख सकते हो उसमें कि आप उसमें एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो भी आपको आएगा, तो आप वहां के थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल राइटर के थ्रू भी आप वो मल्टी एसेट पोर्टफोलियो जो है वो इन्वेस्टर्स को आप सजेस्ट कर सकते हो. Right. So can we suggest this portfolio for lump sum investment at current market conditions? Yes, sir. I mean, obviously you can do it because जब भी हम लोग बात करते हैं, we talk about long term. So if your view is long term, right, so you can always have this exposure, right? And जैसे मैंने बोला कि the underlying assets is also dynamically managed. तो आप उसमें कोई downside नहीं है. आप आपका lump sum हो या SIP हो, आप at this point of time also you can have an exposure. Okay, so there is one more question कि what is the difference between the hybrid portfolio and the multi-asset? So hybrid portfolio में sir we have taken the schemes जहाँ पे this scheme I mean वो hybrid category के आता है, and what is the definition of hybrid portfolio is the equity exposure should be minimum of 65%. और यहाँ पे जो ये जो मल्टी एसेट है इसमें the minimum exposure in active equity will be 35, right? Minimum will be 35, and it can go depending upon what is the view of the fund manager, but there are different allocation. The minimum allocation इसमें gold में भी आता है, foreign assets में भी आता है, debt में भी आता है. तो ये difference होता है multi asset और hybrid portfolio में. Hope I have explained that properly to you, sir. Right. So यहाँ पे 1.25 lakhs का एक्सपोज जो टैक्स बेनिफिट है, बिकॉज अगेन दिस इज समथिंग, ये इट इज नॉट एन इक्विटी, तो आपको 1.25 लाख का इसमें एक्सपोजर नहीं आएगा सर. ठीक है. Okay, so I guess I have covered most of the questions. So if there are no further questions, on a closing note, I would like to tell Kisa. Again, this curated NJ recommended portfolios are carefully drafted portfolios, or carefully curated portfolios, considering कि you probably आपका जो main role, right? You should not spend much time in the analysis of the schemes because इसमें काफी सारा डिटेल माइनिंग होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस. अगर आप इसमें से ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो प्रोबेबली आपका जो कोर काम है इन्वेस्टर्स को मीट करना, उनका एसेट एलोकेशन जो है अराइव करना, उसमें शायद आपका टाइम उतना ऑक्यूपाई आपको उतना मिलेगा नहीं. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर यू सो दैट अल्टीमेटली आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके इन लॉन्ग टर्म, right? So with this note, I would like to end this session. So thank you so much, sir, for your time and patience. Right? If you have any queries, you can always reach the sales team and understand these portfolios, or else you can always write a mail to us. We will definitely revert back for any of the queries or doubts you have about this recommended portfolio. So thank you so much once again, and see you soon for our next sessions. Thank you, sir.